Hello everyone, welcome to Shivam Logic Lab 360. I have started today lecture 1, topic name data structure. I will cover the basic topics of data structure step by step. So start step by step complete information about data structure. Now start data structure. Data structure is a way of organized and storing data in a computer so it can be used efficiently, like fast access, easy update, less memory, waste. So simple definition, a data structure discuss how data is stored, arranged and processed in a program. अगर इसे हम हिंदी में कहें तो डेटा को एक जगह पर कलेक्ट कर व्यवस्थित करने का तरीका। अगर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करें तो दे आर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज simple, second is composite. Now in this diagram, data structure is divided into two types. First simple, second composite. In a first simple data structure, uh, like array structure, and second things composite. Composite divide into two types. First linear, second is non-linear. In a first linear, like a stack, queue, link list, and second non-linear, sorry, like tree graph. Now discuss about types of data structure. First, simple data structure. A simple data structure is a basic way of storing data in a computer in an easy and direct form. So simple data structure are created using primitive data types like integer, float, character. Hmm. कह सकते हैं कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिन्हें प्राइमरी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एरे स्ट्रक्चर लाइक etc. Second, composite data structure. A composite data structure is a data structure that is created using two or more primitive data types. ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिन्हें मल्टीपल सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को जोड़कर बनाया जाता है। एग्जाम्पल लीनियर, नॉन लीनियर, etc. Now, operations of data structure. Operations of data structure are the action performed on data storing in a data structure. या कहे तो डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस. मेन ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज इंसर्ट, सेकंड डिलीट, थर्ड रिवर्सल, फोर्थ सर्चिंग, फिफ्थ sorting, sixth updating. First inserting. Add a new element into the data structure. That use inserting. Deleting. Remove an element from the data structure. Traversal. Accessing or visiting each element that can use traversal. Searching. Finding a specific element. Sorting. Arranging data in ascending or descending order. Updating, modifying existing data. Now start basic of algorithm. Simple definition. An algorithm is a step-by-step process used to solve a problem. Key features of an algorithm. Clear and finite steps. Input, process, output like this.
easy to understand and implementing. Some examples, very simple. Algorithm to add two numbers. First, start. Read two numbers A and B. Add A and B. Display the result. Stop. अगर हम कहें तो किसी प्रोग्राम समस्या के समाधान को स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करना। यह पूरा प्रोग्राम नहीं होता है। एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम एवं मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिससे एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पीड की कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। एल्गोरिथम की ऑल अबाउट सिंपल बेसिक algorithm. Now, complexity of algorithm. There are three types of complexity of algorithm. The complexity of an algorithm are of three types: best case, average case, and worst case. Best case is minimum time and memory used. Average case, normal time and memory used. Worst case, mean maximum time and memory used. One line, algorithm complexity indicate the efficiency of an algorithm in terms of time and complexity. Now, अब बेस्ट केस कह सकते हैं एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में कम समय और मेमोरी की आवश्यकता कम हो। वही एवरेज केस में एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में न तो अधिक समय न ही अधिक मेमोरी का यूज हो, दैट इज एवरेज केस। वर्स्ट केस, एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में अधिक समय और मेमोरी का यूज, दैट इज वर्स्ट केस। Now start array. It is a part of simple data structure. Array. An array is a linear data structure that stores multiple values of the same data type in continuous memory location. कहे तो array में वैल्यू को एक लाइन में स्टोर किया जाता है, अतः इसे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर इन दिस पिक्चर showing index like 0, 1, 2, 3, 4, 5. It is a indexing of each element. Num is number, like integer number. 2 is a first element and 0 is the last element shown in the picture. And 0 indexing is a base address. And so number is the same types of data like integer. Now types of array: one dimensional array like 1D array, two dimensional array, 2D array, multi-dimensional array. Discuss one by one. First, 1D array. A one-dimensional array is a linear data structure that stores multiple elements of the same data types in a single row. Exists using one index. Like example, so int. Int is a data type. Array is the name of array. 6 is the size of array. And like 4, 3, 2, 8, 9, 6. It is elements of array. अगर कहें तो array में सभी डेटा एलिमेंट को एक ही लाइन में स्टोर किया जाता है,
uh, in a 1D array, means one dimensional array. Now second is 2D array, means two dimensional array. A two-dimensional array is a data structure that stores elements in the form of row and column, like table और मैट्रिक्स। अगर कहें हम तो एरे में डेटा एलिमेंट को रो तथा कॉलम के रूप में एक मैट्रिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, int add 4 and 5. 4 is indicate to rows and 5 is indicate to columns. So in this figure, uh, uh, top of columns indexing 0, 1, 2, 3, 4. Uh, in this table, like 5 column in this table and 4 row in this table. Number of total elements equals to row into columns. For example, 4 is to 5 equals to 20. It is the number of total elements in this array. Now, next topic are covered in next video. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more useful tech content. Thank you.